Hello, my dear student. How are you today? Namaskar. This is Dr. Delnaz Jokhi from JG College of Commerce, Gujarat University. Well, my dear student, I'm so happy to see you. Look at my another video. This time, this video is on the topic linear correlation. Now, linear correlation is a topic which is very useful in different semesters of different colleges. But if you are a student of Gujarat University FY BCom semester 1, then linear correlation is very important, easy, and the main purpose of this lecture is a special online lecture based on Gujarat University exam papers. The sums which I'm going to revise with you today for this topic, linear correlation, the theory I'm going to do today in this special session on linear correlation is very important and related to your Gujarat University 2019 exam paper, right? So this is a special lecture based on Gujarat University 2019 statistics paper, section linear correlation, theory and sums. Let's begin. Now I have designed the special lecture for you in such a way that we will be revising most of the important theories of our chapter linear correlation. So, do you remember in your class when I started this chapter, I gave you a simple example that now from school you have come to college, right? Your pocket money must have increased. Tell me something honestly. If your pocket money increases over a period of time, will your expenses also not increase? Yes, my dear students. This is a perfect example, a practical example of correlation between two variables. Which two variables I talked about? Your pocket money as a student, if it goes on increasing, your expenses will also go on increasing. All right, let's take some other examples because you're a commerce student. Income increases, expense increases, number of vehicles on the road, let's say of Ahmedabad city increases, the number of accidents also in Ahmedabad city increases, right? If the demand for a particular product and the price of a particular product, they are all examples of correlation. But what is important to note over here is that there is a simultaneous change. एक साथे बदलाव થાય છે. If your pocket money is increasing, that is why your expenses are also increasing. So you get the point? There has to exist a cause and effect relationship between the two variables that you are studying. So this is a small introduction to linear correlation. Now, as you all know the meaning of correlation, but since I am revising a lot of theory in relation to 2019 paper, let's revise this also very quickly. What is the meaning of correlation? As you read with me, if the change in the values of two variables are simultaneous, ek साथे बदला है, right? And when the change in one variable is due to a change in the other variable, आपके खर्चे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कॉलेज लाइफ में आपकी पॉकेट मनी भी बढ़ी है. That's a perfect practical example I can give to a student like you. So, such variables are said to be correlated. Great. That's good understanding. If you want to know the concept of correlation a little bit more technically, then simple correlation is just a statistical tool. ये आपको क्या help करता है? It helps in studying the relationship between two variables, right? Okay, so when you want to use a statistical tool to study the relationship between two variables, क्या use करोगे आप? Linear correlation. Provide they have a linear relationship between them. That's very important. Okay, because the variables have to change simultaneously. That is very important. Then only they are said to be correlated, and they must have a cause and effect relationship. एक की वजह से दूसरे में change आ रहा है, ठीक है? All right. So now let's quickly see which are the types of correlation. Oh yes, in your Gujarat University 2019 paper,
They had not directly asked you this type of correlations, but what they had asked you was for a 1 or 2 marks was give an example of positive correlation, right? So let's revise the whole theory itself. As you know, there are 2 types of correlation: positive, as you say, dhan sa banche, and negative, run sa banche, right? Okay. Now, what do you mean by positive correlation? Remember what I taught you in class? Right. I had told you, if your pocket money is increasing, that is why your expenses are increasing. Are these 2 variables changing in the same direction? दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं? कम तो नहीं होने चाहिए, right? So when 2 variables change in the same direction, if you read over there in red color, see, same direction. Okay, when one value increases, the other increases, one value decreases, the other decreases. So in the Gujarat University exam, they asked you an example of positive correlation. Well, एक example तो मैंने आपको already दे दिया, very practical one. But if you go into your reference books, they use the example: age of husband increases, age of wife increases, obviously income increases, expense increases, your pocket money increases, your expenses increases. So these are all examples of positive correlation. Coming on to negative correlation. उल्टा है इसका. When the change in the values of 2 variables is in the opposite direction, one is increasing and the other is decreasing. एक variable बढ़ रहा है, दूसरा variable कम हो रहा है. Opposite direction में जा रहे हैं. And the best example you all always give me is, ma'am, price of some commodity will increase, the demand for that will decrease in normal circumstances. Well, there's one more example. See on the screen. If your expenditure increases, your savings will decrease. Expenses increase, savings decrease. They're moving in the opposite direction. That's an example of negative correlation. Good going, good revision regarding types of correlation. All right. Oh, yes. What is meant by probable error? Write its formula and state its use. This was a very important question for approximately 3 to 4 marks in a Gujarat University 2019 paper. Well, हमने पूरी short note यहाँ पे discuss कर लेते हैं. फिर depending upon the marks, you can increase or decrease the importance of the length and the points you want to cover in the short note. पर मैं probable error का mostly सब कुछ यहाँ पे cover कर रही हूँ for revision. All right. So first of all, एक simple सा बात करते हैं. You know what is a population and you know what is a sample. गुजराती में कही ये तो समष्टि, ये तुम्हारा population. निदर्श, that is your sample, right? अब suppose मान लो तुम कोई research कर रहे हो और आपके research के अंदर पूरे population का correlation suppose तुम्हारे पास है, population का R तुम्हारे पास है, ठीक है? और on the other hand, आपने उस पूरे population में से samples लिए हैं, निदर्श निदर्श है, पर as you see in red color over there, the size of the samples should be the same, okay? और हर एक sample का, sample number 1, 2, 3, 4, हर एक sample का भी तुमने correlation ढूंढा है. तो आपके पास क्या है, थोड़ा imagine करो, आपके पास बहुत सारे छोटे-छोटे samples जिसकी size same है, उनका correlation तुम्हारे पास है, right? और population का correlation भी I think आपको roughly पता है, ठीक है? So, what is probable error? Okay, error. Look at the meaning. ध्यान से सुनो. The average of the square of the difference. कौन difference? सेनो error से सेनो difference से of the difference of the correlation coefficients obtained from all possible samples. And the population correlation coefficient. So, તમારા sample ના જે correlation coefficients છે, એ અને તમારા population correlation વચ્ચે જે તફાવત છે, the difference, but the average of the square of the difference has to be taken. Okay? So, ये जो आता है, इसको हम बोलते हैं probable error of the correlation coefficient. Right? Okay. Now, what is the formula? Mind you, आपको इस फॉर्मूला के बेस पे शॉर्ट सम्स आपकी दूसरे एग्जाम्स में आ सकते हैं, राइट? सो एज यू सी ऑन द स्क्रीन, प्रोबेबल एरर को शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं P dot E dot. द फॉर्मूला इज 0.6745 bracket 1 minus r square close bracket upon under root n. Over here, r is the correlation coefficient and n is the normal sample size. Okay, remember, probable error में sample size कैसी होनी चाहिए? The sample size for all the samples must be the same.
Very good. That's very important to note. All right. फिर आपकी गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम में प्रोबेबल एरर का एक ही यूज पूछा था. हम यहाँ पे दोनों डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स सी. Number 1. With the help of probable error, we can determine the limits within which the population correlation coefficient is expected to lie. તમારો સમષ્ટિનો R કયા બે રેન્જમાં આવશે, કઈ લિમિટમાં આવશે, that is also what you can find out through probable error. कैसे पता चलेगा? तो देखिए एक फॉर्मूला है R plus or minus PE. एक बार R PE कर लीजिए और एक बार R minus PE कर लीजिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस. ये फॉर्मूला से आपको क्या मिलेगा? You will get the population correlation coefficient की limits, right? Upper limit and lower limit. Great. Point number 2, use number 2 of probable error. There you go. Come on, read with me. One can judge whether the correlation in the population is significant or not. अब आपकी पूरे population में जो correlation है वो significant है कि नहीं है, ये भी आप probable error की मदद से पता कर सकते हो. कैसे? There are two simple rules as you see on your screen. If R is less than PE, there is no evidence of correlation in the population, right? Correlation in the population is not significant. But look at number 2. If R is greater than 6 times probable error, then there is evidence of significant correlation in the population. So this was a very important question asked in your Gujarat University exam for approximately 3 to 4 marks. Yes, correct. 2019 paper, right? You know that. Okay, great. Now, along with this theory of probable error, for around 3 to 4 marks, there was a short sum asked. Now I'm starting with all these sums of your Gujarat University 2019 paper in the form of, मैं ये assume कर रही हूँ बेटा कि आप through this chapter of mine, through this lecture of mine, special lecture of mine, आप मेरे साथ correlation revise कर रहे हो. I'm not teaching, I'm revising. All right, people, let's see. आपकी 2019 में क्या दिया था? Look at the values. ढूंढना क्या है? Find the value of R. Correlation coefficient ढूंढना है. What is given to you? N is equal to 10, sigma x 30, sigma y 50, sigma xy 180, standard deviation of x 2 and standard deviation of y 3. ये सारा data आपको दिया गया है, right? अब there are many formulas, you know. I've taught you in class कौन सा formula कब use करना है, सब कुछ आपको पता है. आपकी reference book में भी है, right? Okay. So keeping in mind the data available to you, tell me something. आपके पास सिग्मा x है, आपके पास सिग्मा y है और आपके पास n is equal to 10 है. क्या आप x bar y bar ढूंढ सकते हो? Can you find out x bar y bar? Of course you can find out. Okay, so based on the data available to you, let's see what is the possible solution of this particular sum number 1. जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, ये रहा. अगर आपको लिखना है तो क्विकली लिख दीजिए. चलिए, this is the data given to you. Okay, on the basis of this data, हम सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको R की वैल्यू इजीली मिल जाएगी. क्या है फॉर्मूला? R is equal to sigma xy minus n x bar y bar upon n sx sy. सारी वैल्यूज आपके पास है, सिर्फ x bar y bar मिल जाएगा. कैसे? आपने मुझे अभी बताया, राइट? x bar is equal to sigma x 30 n 10 आपको दिया हुआ था. तो बताइए x bar कितना आया? 0 0 cancel 3. Good. Y bar कितना आया? Sigma y was 50, n was 10, 0 0 cancel. क्या बचता है? Y bar is equal to 5. Great going. Very nice. Easy? कैल्सी तो हाथ में होगा ही. नहीं है? ले आइए जल्दी से. हमको बहुत सारा कैलकुलेशन आज करना है. Come on. Now, all the values which were given to you plus x bar y bar जो आपने मेरे साथ गिना, चलो इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर. Come on, let's substitute the values quickly, my class. Yes, my dear student, check out. Sigma xy की जगह पर 180 minus n की जगह पर 10, x bar 3, y bar 5. नीचे come to the denominator n sx sy. I've substituted all the values for you. Come on, pick up your calci, please. Calculate for me. What do you get? I will help you. Come on. You will get R is equal to 180 minus 150 divided by 60. Do you get that? Please do check.
All right, so what's your answer? R is equal to 3 by 6. That gives you 0.5. All right, now is 0.5 your answer? Well, yes, the R is equal to 0.5, yes, but you can write your answer in a better way. And you know that since the answer is plus 0.5, you can say that there is partial positive correlation between the variable x and y, which was under study. All right, sum number 1, you have understood, I'm sure for that. Moving on to sum number 2. You remember we have learned Spearman's rank correlation method in the class? Exactly. Now, in Spearman's rank correlation method, there are basically two formulas. One is a simple formula and the other is a little modified formula if you have repeated numbers. If you have repeated ranks. ध्यान से numbers को देखिए. X के numbers क्या है? 25, 60, 80, 60, 45, 50. और y के numbers क्या है? 40, 90, 65, 90, 65, 90. कौन सी method? Spearman's rank correlation method has to be used for sum number 2. क्यों? Because आपको बोल दिया गया है find rank correlation coefficient. So it has been very clearly given to you over here that आपको rank correlation coefficient ही use करना है. I think we are clear with that कि ये formula क्यों use करना है, right? Quickly let us revise. Come on, your calcies in your hands, please. All right. So first of all, you always write down x and y in your columns, right? Rank correlation है, Spearman का formula है. सबसे पहला step क्या होगा? First, we will find out rank of x, that is Rx, और बाद में we will find out rank of y, that is Ry. Okay? So currently, you just concentrate on x की values. That is the first column, 25, 60, 80, 60, 45, 50. Okay? वो green color वाला y फिलहाल के लिए भूल जाओ for a few seconds and see the third column. See, dark blue और light blue. बस ये दो column की हम बात करने वाले. मैंने color coding के साथ आपके लिए sum किया है. Let's begin. How do you give ranks? आपको याद है. The highest number of the variable is given the first rank. Okay? तो चलिए, ये आपका x variable है. Look at all the numbers over here. And this 80 is the highest number, right? तो 80 के आगे देखिए कौन सी rank हमने रखी है? Rank is number 1. Very good. 80 के बाद कौन सा number है? 60, 60. दो बार आता है. Repeated ranks आएगी यहाँ पे. हम यहाँ पे rank number 2 और rank number 3 नहीं दे सकते हैं, right? तो क्या सिखाया था मैंने? 2 plus 3 उसका आपको एवरेज लेना है. So 2 plus 3 divided by 2, 2.5. Great going. So 60 का rank कितना होगा? 2.5, 2.5. Now, very important. Rank 2 and rank 3 आपने indirectly use कर ली है. So next number जो आएगा उसमें आप rank 3 use नहीं कर पाओगे. आप कौन सी rank use करोगे? Rank 4. Good thinking. 60 के बाद next छोटा number कौन सा है? 50. So 50 is given the rank 4. Very good. 50 के बाद next छोटा number कौन सा दिख रहा है? 45. उसको rank दे दो 5. और उससे कोई छोटा number है? देख लीजिए, check कर लीजिए. हाँ, 25. उसको rank दे दो 6. So I hope you understood कि हमने average ranks ली है because numbers are repeating. So this is your Rx. Let's go on to Ry. Okay. Ry, as you see on your screen, is related to green color वाला column of y and light green color rank of y, that is your Ry. आपको सिर्फ वही दो column देखने हैं, ठीक है? Okay. As usual, in all the values of y, ध्यान से देखना, बहुत important है ये sum. 40, 90, 65, 90, 65, 90. Highest number कौन सा है? कौन सा है? 90. और कितनी बार आ रहा है? Look at that. 90, 90, 90 comes 3 times. Yes? So you cannot give rank number 1, you cannot give rank number 2, and you cannot give rank number 3. तो क्या करोगे? आप middle वाली rank लोगे, आप average rank लोगे, correct? So 1, 2, and 3. Middle rank is 2. Absolutely correct. So 90 को आपने rank दे दिया 2. ये वाले को 90 को भी दे दिया 2 और ये वाले को भी 90 दे दिया आपने 90 को रैंक दे दिया 2, राइट? एवरेज रैंक लिया आपने. समझ में आया ना सबको? वेरी गुड.
नाउ क्या आप रैंक 3 दे सकते हो नेक्स्ट नंबर को? नहीं दे सकते हो, क्यों? बिकॉज ये 2 जो आपने लिखा है, जो मैंने आपके लिए लाइट पिंक कलर में, आपके देखो 90 के सामने लाइट पिंक में ब्लू, 90 के सामने लाइट पिंक में, कलर कोडिंग के साथ मैंने आपके लिए किया, एब्सोल्युटली। तो 2 कहां से आया? 1, 2 और 3 का एवरेज था, तो 3 तो यूज हो गया, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? नेक्स्ट नंबर होना चाहिए अगले छोटे नंबर के लिए 4. बट see very carefully on your screens. See, next chota number is highlighted on your screen, and that is 65. It is orange color. Yes, 65 orange color. कितनी बार आ रहा है आपके स्क्रीन पे? 2 बार आ रहा है, माने इसको रैंक 4 और रैंक 5 की जगह पर आ रहा है। रैंक 4 भी नहीं दे सकते हो, रैंक 5 भी नहीं दे सकते हो, तो क्या करोगे? क्या बोला मैंने आपको? क्या बोला? Yes, very good. You will take the average, 4th or 5th rank. 4 plus 5 divided by 2 का average कितना rank आया? 4.5. Check out your screen. Check out your screen. The orange color I've highlighted for you. See, I've solved the sums with color coding for you, ताकि आपको आराम से पता चल जाए कौन सी बात चल रही है. Yes, 65 orange color, 4.5 is the rank. ये वाला 65, 4.5 is the rank. देखो, अब नेक्स्ट रैंक कौन सी होगी? 5? नो, 5 तो हमने यूज कर लिया एवरेज लेने के लिए. सो नेक्स्ट नंबर जो उससे छोटा होगा, 65 से छोटा नंबर कौन सा है? एक ही नंबर बचता है, ये रहा ग्रीन कलर में, वो है 40. करेक्ट. तो उसको रैंक क्या दोगे? 5 दोगे कि 6 दोगे? 6 दोगे, 5 नहीं दोगे, बिकॉज 5 तो एवरेज 4.5 लाने में यूज हो गया. वेरी गुड. So last number 40, so सबसे छोटा नंबर था of your variable y is given the rank of 6. That's great going. That's great going. Okay. Now, for some time, you may not see me on the video, but you will definitely hear me. Okay. ठीक है. अब बताइए. Generally, what happens is that after finding out the value of rx and ry, आप क्या ढूंढते हो? You find out D. What is D? D is the difference of the ranks. Look at my screen. आपको RX, RY यहाँ पे मिल गया था. It's now in yellow color coding. D is the difference between the ranks, as you know it very well. RX minus RY. Very good. तो देखिए, 6 minus 6, 0. Look at the yellow color 2 columns, right? 2.5 minus 2, 0.5. 1 minus 4.5 minus 3.5, 2.5 minus 2, 0.5, 5 minus 4.5, 0.5, और लास्ट येलो वाला क्या है? 4 minus 2 is equal to 2. So simple, D is the difference between the ranks. Okay, now according to the Spearman's rank correlation method, आपको d square की वैल्यू चाहिए. आई एम श्योर यू रिमेंबर द फॉर्मूला. हियर यू गो विथ d square. नाउ rx ry का यूज हो गया, d मिल गया. अब d की मदद से यू विल फाइंड आउट d square. लुक एट इट. 0 का स्क्वायर 0, 0.5 का स्क्वायर 0.25, minus 3.5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, gives you 12.25. 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.25 दो बार आया, और 2 का स्क्वायर लास्ट में 4. Now, the next step is after you find out d square, आपको d square का total लेना है. चलिए, you have the calculus in your hand. Come on, my dear student. 0 plus 0.25 plus 12.25 plus 0.25 plus 0.25 plus 4. What do you get on your calci? Check. What do you get on your calci? I think you get sigma d square is equal to 17. Look at your screen. Yes, the total is sigma d square is equal to 17. It is flashing on your screen on your right hand side corner. Look at it. Yes, look at my animation. Sigma d square is equal to 17, which is the total of all the values of sigma d square, which you just found out and helped me find it, right? Great going. That's very nice. Now, if you are doing the sum with me,
if you are copying the sum with me, then this is how your table will look after you find out Rx, Ry, D square, sigma D square equal to 17. So this is how your table should look like. Now, आपकी पूरी टेबल तो कंप्लीट हो गई है, टेबल कंप्लीट हो गई है, सिग्मा डी स्क्वायर 17 मिल गया है, कुछ नहीं करना अभी. You know the formula, ये Spearman's rank correlation का special formula क्या है? Look at your screen. Please write down this important formula to be used for repeated ranks. Okay? 1 minus 6 bracket sigma d square जो हमने अभी ढूंढा plus आपको correction factors ढूंढने पड़ेंगे. जितनी बार कुछ repeat हुआ है, okay, you'll have to calculate the correction factor for each number that was repeated, each rank that was repeated. Okay, ठीक है? Okay, so let's come back to the formula in the yellow. Upon n square minus 1. Mind you, वो 1 minus the whole calculation है, huh? Okay, what is CF? It is the correction factor. I think you know this, right? Quickly याद कर लेते हैं. You have to calculate the correction factor for each observation that was repeated. Okay, so correction factor, अब जितना भी number repeat हुआ है, वो सारे numbers के लिए आप correction factor ढूंढोगे with the formula. क्या है formula? Please write down m square minus 1 upon 12. Now, this is the formula for you for correction factor. Okay, if you are writing down, then please quickly write down in your notebooks. क्या लिखोगे? Correction factor का formula क्या है? The formula is m bracket m square minus 1 upon 12. And what is m? Look at your screen very carefully. M is equal to the number of times an item or an observation is repeated. Now, what do I mean by it? Quickly, let's revise. देखिए, what happens is, if you remember, आपका table शायद अगर आप मेरे साथ sum कर रहे हो, आपका table आपने सामने होना चाहिए, right? Okay, now check. For the x values which are there in the first column, number 60 याद है, 2 बार repeat हुआ था. Absolutely. So number 60 was repeated 2 times. So what is the value of m? कितनी बार repeat हुआ? 2 बार. So m is equal to 2. So first of all, we'll find out the correction factor for the number 60 of your variable x. So formula आपको पता है, m square minus 1 upon 12 हमने अभी देखा. तो m की जगह पर हमने क्या लगाया? 2, right? 2 bracket 2 square minus 1 upon 12. Solve करो. Do you get 0.5? Yes, you will get 0.5 as the correction factor when m is equal to 2. Now, check your column if you have the sum written with you. X में अब और कोई number repeat नहीं हो रहा है. Let's go to variable y. Yes. In your variable y column, you remember? सबसे पहला number 90, 90, 90. कितनी बार आया था 90? Do you remember? 3 times. Yes. The number 90 was repeated 3 times. So अभी आपके correction factor के m की value क्या हो जाएगी? Check out. M is now equal to 3. Q3, because the number 90 repeated 3 times. Its rank was repeating 3 times. That's how you got m is equal to 3. Okay, so let's find out the correction factor for this number 90. अब m की जगह पर 3 लगा दो. 3 bracket 3 square is 9 minus 1 upon 12. कितना आया correction factor when m is 3? आया 2. The correction factor is 2. Okay, पहला correction factor हो चुका है, ये दूसरा correction factor है. All right, अभी in your variable y एक और number repeat हो रहा था 65. Very good. पर 65 कितनी बार repeat हुआ था? 65 repeated twice, only 2 times. So your m is equal to 2. Same way, now we know what to do. Correction factor for this 65 number, m की जगह पर 2 लगा दो. कितना आया? 0.5. Okay, remember 0.5 पहले आया था, फिर आपको 2 मिला और फिर वापस 0.5 आया. Okay, please remember this. This is your formula जो हमने अभी डिस्कस किया, right? तो देखिए, r is equal to 1 minus 6 bracket sigma d square. Remember the table, last column कितना आया था sigma d square? 17. Very good, that's nice. Plus हमने correction factor पहले 0.5 लाया, फिर 2 आया और फिर वापस 0.5 आया. ये पता चल गया आपको, right? Okay. Upon
n square minus 1. हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन की पेयर्स थी? और n was 6. Look at x और y कितने पेयर्स है? 6 pairs है, right? So n is 6. Come on, you have your calci in your hand? Please calculate the value of r. I'll help you a little. Very good. So what do you get? 1 minus 120 divided by 210. Now listen. पहले आप 120 divided by 210 कीजिए, फिर आपको जो आंसर आता है, let's see what you will get. I will help you out. You will get 1 minus 0.57142, right? उसको 1 में से माइनस करोगे तो your final answer of the Spearman's rank correlation formula would be 0.42857. And now, of course, this is your answer of R, but let's write the answer in a better way. कैसे लिखोगे? Check your screen. Yes. R is equal to 0.42857. That means positive correlation तो है, पर partial positive correlation है. अंशतः धन संबंध 6. याद आ गया ना? Very good, my class. I'm so happy. Very good. My dear student, you are doing very good work with me. Thank you for listening to me up till here. And now, a very important sum. You know, most of you all have studied correlation in school. But at your college level, one very important formula of bivariate table. This you have not studied in your school level, most of you, right? Okay, so this sum becomes super important for you. Of course, Gujarat University 2019 का sum है. And look at your screen. 17 marks के लिए ये sum पूछा गया है. Okay, so come on, give the heading please. Please do this sum with me. I have tried my best to make you understand this sum. So I would request you कि आप भी एक पेन और पेपर हाथ में ले लो और हो सके तो मेरे साथ सम करो या तो फिर एटलीस्ट डू द कैलकुलेशंस विद मी. मैं जो कैलकुलेशंस आपको सिखाऊंगी कलर कोडिंग के साथ रिवाइज करवाऊंगी, सिखाऊंगी नहीं, सॉरी, रिवाइज करवाऊंगी, आपको रिवाइज करना है मेरे साथ, ठीक है? ओके, ग्रेट, गोइंग. 7 marks sum. Okay, people. Now, first of all, x is given in class intervals, groups है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. X is like this, okay? Top to bottom, it is vertical. Y की values क्या है? Green color में आपके पास 5, 6, 7, 8. Y is like this, horizontal, okay? Please remember this with me. It's very important. Okay, now, this is a very important formula. You must write down this formula. There's a special formula for group data. That is bivariate table. Bivariate table आपने अभी देखी, ये वाली x और y group data है, और ये बीच में जो दिया है 2, 1, 1, 2, 3, 1, ये सारी frequencies है. You should know that. This is f. That is the frequency. Okay, common frequency. Now, formula आपने लिख लिया है. Please remember one thing. ये sum बहुत बड़ा है, last sum है, but बहुत important है. Be with me, please. Okay? The formula is, as you see on your screen, n sigma f into u into v minus sigma u frequency of u, sigma v multiplied by frequency of v. ध्यान रखना, it is sigma u frequency of u, नीचे है. Sigma v frequency of v, वो वाला v subscript में है. Be very careful. Upon under root n sigma u square frequency of u minus sigma u frequency of u whole square. यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये होल स्क्वायर है, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट n sigma v square frequency of v minus sigma v frequency of v ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर. ओके, इतना बड़ा फॉर्मूला इजी है, हो जाएगा. इफ यू प्रैक्टिस इट इज डन. Practice makes a person perfect. And for this, you need to practice. And these sums are very important. करना ही है, एग्जाम में आएगा ही. Now, steps. इतना बड़ा formula, तो steps भी थोड़े बड़े होंगे. But we will go step by step. What do I mean by step by step? हम एक table बनाएंगे, right? उसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? Look at the formula. Formula में सबसे पहले क्या है? n. तो हम सबसे पहले n ढूंढेंगे. n कहाँ से आएगा? Frequency का total. Okay?
उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए मैंने रेड कलर में किया है. ऑल द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, मैम सिग्मा एफ इंटू यू इंटू वी कैसे ढूंढते हैं? उसका आंसर यहाँ पे है, इस लेक्चर में है, थ्रू योर गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर, माय डियर स्टूडेंट्स. सो बी विथ मी. सिग्मा एफ यू वी का स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, करेंगे सेकेंड स्टेप में. बाद में हम ढूंढेंगे सिग्मा यू इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ यू. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में v फ्रीक्वेंसी ऑफ v. ओके, उसके नेक्स्ट स्टेप में नीचे ये वाला सिग्मा u स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ u, और बाद में हम ढूंढेंगे सिग्मा v स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ v. इतने सारे स्टेप्स है, राइट? ओके, सो बी विथ मी व्हेन वी आर डूइंग दिस सम. Let's begin. All the best to you for understanding. All the best to me. I hope I'm able to make you understand, right? Okay, let's begin. Now, when this sum is going on, शायद आप मुझे वापस नहीं देख पाओगे. Don't worry about that because the table is so big. For some minutes, I will switch off my video and I'll come back again. But you will be able to hear my voice. So just listen to me and see the steps. Okay. Now, first of all, you have to know कि ये table का मतलब है क्या. Now, let's understand the table. X अगर 0 to 10 है, okay, this one, और Y अगर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि suppose करते हैं X are the marks of statistics test and Y are the marks of some simple, let's say कोई और subject लेते हैं, English की test, okay, okay, English की test में 5 marks और statistics की test में 0 to 10 marks. कितने students को आए? तो भाई 2 students को आए. That's how you read the frequency. Once more, English में किसी student को 5 mark मिले, पर statistics में उसको 10 to 20 marks मिले. ऐसे कितने students हैं? Only 1 student. That's how you read the frequency. एक और देखते हैं कौन सी frequency का. चलो ये frequency का. Number 3. ये नंबर 3 का मतलब क्या है? सुनो मेरी बात ध्यान से. स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में आपको 10 से 20 मार्क मिले और इंग्लिश के एग्जाम में यू गॉट 7 मार्क्स. ऐसे कितनी बार हुआ? ऐसे कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स बिटवीन 10 to 20 इन स्टैट्स एंड 7 इन इंग्लिश मिले? ऐसे कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले? 3. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो मैंने आपके लिए लाइट ऑरेंज कलर में किया है, दिस इज योर कॉमन फ्रीक्वेंसी. ओके, और आपको एक बात पता है कि सबसे पहले फॉर्मूला में आपको क्या ढूंढना था? सीधा फॉर्मूला एक और बार बता देती हूँ मैं आपको n ढूंढना था, बाद में सिग्मा f इंटू यू इंटू वी. ठीक है, ओके, और फॉर्मूला आपने लिख लिया है. n कैसे ढूंढते हैं? चेक आउट. हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट मार्क्स बिटवीन 0 to 10 इन स्टैटिस्टिक्स? देखिए 2 plus 1 फ्रीक्वेंसी 3. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ x इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ u. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ u हम बोलते रहेंगे, पर वो कहां से आई? x में से आई, राइट? एक और बार, कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स 10 to 20 मिलते हैं? तो भाई 1 plus 2 plus 3 6. वेरी गुड. 20 to 30 मार्क्स कितनों को मिलते हैं? ओनली 1 स्टूडेंट. ओके, उसका टोटल ले लिया, हर एक आपने एक कॉलम का टोटल ले लिया एंड दैट इज x यहाँ पर है, उसका टोटल हमने यहाँ पे लिया. सो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ u. वेरी गुड. लेट्स कम टू y. 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले? तो भाई 2 plus 1 is equal to 3. y का टोटल, राइट? नेक्स्ट नंबर इज 6. y का नेक्स्ट वेरिएबल इज 6. 6 कितनी बार आया? तो 1 plus 2 is equal to 3. 7 कितनी बार आया? 3. ओके, 8 कितनी बार आया? कितने नंबर्स है? 1. ओके, सो हाउ डिड यू गेट दिस? You got it as the total. ठीक है, 2 plus 1 3, 1 plus 2 3, 3 1 ऐसे. 3 plus 3 plus 3 plus 1 कितना हुआ? 10. Very good. Check this way also. f x भी check करो. 3 plus 6 plus 1 कितना आया? 10. Your n is equal to 10. समझ में आ गया? Very good. अब आगे बढ़ते हैं. Next thing that you want to find out is, if you remember red color, sigma f into u into v. पर f तो आपके पास है. f is this 2 1 1 2 3. ये आपका frequency है, common frequency which I made you understand. But now you need to find out u and v. अब u v formula, shortcut formula सबके दिमाग में है. You all know that very well. पर u v calculate करने के लिए
आपको सबसे पहले मिड वैल्यूज लेनी पड़ेगी. ओके, सो कम ऑन, लुक ओवर हियर. मिड वैल्यू ऑफ x, यू कैन लुक एट माय कर्सर. मिड वैल्यू ऑफ x कैसे आया? 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2. इसका मिड वैल्यू कितना आया क्लास इंटरवल का? 5. वेरी गुड. 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2. 10 और 20 का मिड वैल्यू बच्चे शू आवे? 15. वेरी गुड. सो 15. 20 to 30 मिड वैल्यू क्या होगी? 25. वेरी गुड. अब सेम वे आपने जो x के लिए किया वो y के लिए करोगे, बट ओवर हियर यू डोंट हैव क्लास इंटरवल, यू हैव 5 6 7 8. डायरेक्टली कॉपी 5 6 7 8 एज योर मिड वैल्यूज. आई एम श्योर इतना आपको समझ में आया. ओके, इन केस यू वांट 30 seconds to write down this sum, please write down this sum with understanding. I give you 30 seconds. Are you writing? Okay, let's move ahead. Now, x पे से आपको u मिलेगा और y पे से आपको v मिलेगा. पहले हम कैलकुलेशन करेंगे x का. ध्यान दीजिए, प्लीज सी वेयर माय कर्सर इज. u is equal to x minus a upon cx. याद है वो u v फॉर्मूला आप करते शॉर्टकट? Exactly the same steps. Okay, इसमें x is what is over here. A is the assumed mean, as you see. 15 I have taken as the assumed mean of x. Okay, upon cx. What is cx? Cx is the class interval. Okay, ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. और आपको मिड वैल्यूज कितनी आई? 5 15 20. इसका इंटरवल कितना है? क्लास इंटरवल શું છે? તફાવત કેટલો છે? 10 10 નો છે. Exactly. So your cx is equal to 10. Okay, come on, let's start. x minus a upon cx for number 5. देखिए स्क्रीन पे ध्यान से. 5 minus a is 15 as you mean. आप जनरली सेंटर वाला नंबर लेते हो, राइट? ओके, अपॉन 10 कितना होता है? कैलसी पे चेक कीजिए. 5 minus 15 divided by 10 कितना आया? -1. वेरी गुड. अब इसकी बारी. 15 minus 15 upon 10 कितना आया? 0. अब इसकी बारी. x ये वाला फॉर्मूला यूज करो, राइट? x 25 minus a as you mean हमने 15 लिया हुआ है upon cx. cx was a class interval 10. 25 minus 15 upon 20 कितना आया कैलसी पे? 1. वेरी गुड माय क्लास. सो इससे आपको u मिल गया. ओके, रिमेंबर ये आपका f था, कॉमन फ्रीक्वेंसी. ये आपका u मिल गया, राइट? अब हम v की बारी बात करते हैं. लुक एट माय कर्सर प्लीज. Look at the yellow color mid value of y. You can see the color coding. Very good. Mid value of y कैसे आया ये तो आपको पता है. 5 6 7 8 हमने वहां से कॉपी किया. And we have assumed your b assumed mean of y to be 6. Okay, ठीक है. इसमें क्लास इंटरवल कितना है? 5 6 7 8. કેટલો अंतर છે? 1 નો. So your cy is equal to 1. Okay, good. Come on. 5 minus b, y minus b upon cy, ये normal formula uv formula वाला. 5 minus 6 upon 1 कितना होता है? -6. Please be very careful of the minus signs. Okay, 6 minus 6 upon 1 0. 7 minus 6 upon 1 1. 8 minus 6 upon 1 हर बार लिखने की जरूरत नहीं है. लिखो नहीं लिखो फिलहाल चलेगा. 2. Did you understand? So your u is equal to -1 0 1. अगर आप लिख रहे हो जल्दी लिख लीजिए प्लीज. And your v is equal to -1 0 1 and 2. Okay, so आप देखिए आपको f दिया गया है ऑरेंज कलर में. आपका u ये रहा, आपका v ये रहा. अब आपको ढूंढना है f into u into v. माने ध्यान से सुनना, आपको 3 चीजों का मल्टीप्लिकेशन करना है. f multiplied by u multiplied by v. अब एक शॉर्टकट आपको पता है that whenever you are doing multiplication, कहीं पर भी अगर 0 आएगा, so anything multiplied by 0 is 0. Absolutely. So now look at the screen. कुछ change हो रहा है. Look at the screen very carefully. Now we'll be doing the calculation of f into u into v. Okay, अब देखिए, look at u. 0 है, ये सारे आपके f है. Okay, अब कंफ्यूज मत होना, जितना मैं बताती हूँ उतना ही देखना. Look at this number 2. This number 2 over here,
दिस, ये वाला जो सेल है उसका हम F इंटू यू इंटू वी ढूंढने वाले हैं, ये वाला सेल. ओके, इट्स हाईलाइटेड इन येलो. F इज 2, उसके सामने वाला U कितना है चेक करो, 0. उसके सामने वाला V कितना है 0. मैच द येलो विथ द येलो विथ द येलो, तीनों को मल्टीप्लाई करो. 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना आया 0. वेरी गुड. सो 2 इंटू 0 देखिए यहाँ पर जो आंसर आया F इंटू यू इंटू वी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो अब यहाँ पे ऐसे एक स्मॉल रेक्टेंगल बना दोगी जैसे मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू में बनाया है, एंड यू विल राइट डाउन द आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन हियर. ओके, ठीक है. नाउ लेट्स डू द वर्किंग ऑफ दिस वन. ध्यान दो, ये वाला वन, ये आपका F है. चलो सामने वाला U कितना है 1 इज योर F, सामने वाला U 0, सामने वाला V -1. बताइए 1 multiplied by 0 multiplied by -1, F into U into V कितना आया इस 1 के लिए 1 into 0 into -1 is 0. So multiplication के बाद मैंने छोटा वाला ब्रैकेट करके 0 यहाँ पे लिख दिया. I am sure now you are understanding. Let's see ये वाला 0 कैसे आया. ये वाला 0 ये 3 का है, right? Okay, check. 3 multiplied by F, उसके सामने वाला U, उसके सामने वाला V. Very good. 3 into 0 into 1 0. Very good. Let's check out ये वाला 0 कैसे आया. अब ध्यान देना, ये वाले 1 की बात कर रहा है, ये वाला 0. Okay, 1 is your F, उसके सामने वाला U is -1, उसके सामने वाला V is 0. Yes, so 1 is your F into U, उसके सामने वाला okay -1, और उसके इस साइड वाले सामने वाला is 0. So 1 into -1 into 0 is 0. जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आया वो हम छोटा वाला रेक्टेंगल करके यहाँ पे लिख देते हैं. I am sure you have understood this much. Please write down. I am giving you 30 seconds. अभी थोड़ा कैलकुलेशन बाकी है. ये वाला 2 और ये वाला 1 फ्रीक्वेंसी बाकी है, but you first write down please. Quickly write down. Okay, चलिए, very nice. अभी आगे बढ़ते हैं. Be with me. अब हम थोड़ा फास्ट जाएंगे. Okay, 2. यहाँ पे क्या आएगा वो चेक करते हैं. F is your 2. देखो कलर कोडिंग, यहाँ पे येलो और यहाँ पर भी येलो. वेरी गुड. 2 into -1 into -1 कितना होगा, कैलसी पे करो जल्दी. 2 into -1 into -1, what do you get? Very good. Minus minus plus, 2 ones are 2. Look at your screen. You get the answer 2 over here. Do you see the number 2 flashing on your screen? Very good, my class. कैसे आया? Frequency 2 multiply F into U into V. तीनों yellows को match करो. F into U into V. तीनों को हमने multiply किया. 2 into -1 into -1 gives you the number 2. I think you're getting the point now. ये नंबर बाकी रह गया. देखिए ये वाला 1. अब आपको समझ में आ गया. चलिए बताइए. 1 is your F into U is your 1 into V. That is 2. बताइए कितना होगा? F into U into V. देखिए कलर कोडिंग के साथ है. Pink 1 into this 1 into this 2. देखिए सेम कलर है. मल्टीप्लाई करो तीनों स्क्वायर्स को. 1 into 1 into 2 कितना आता है? 2. Very good. 1 ones are 1, 1 twos are 2. So that is how this 2 comes over here. अब चेक कर लीजिए, अंदर कोई फ्रीक्वेंसी बाकी नहीं है. और जब कोई फ्रीक्वेंसी बाकी नहीं होती तो you will take the totals. Very good. देखिए टोटल्स कैसे लेने हैं. जो भी आपने ब्रैकेट में कैलकुलेट कर लिया है, देखिए 2 plus 0. Look at the ग्रे कलर कोडिंग किया है मैंने आपके लिए. 2 plus 0 2. 1 plus 0 ब्लू कलर में 1. यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी है 0 तो 0, और यहाँ पे कुछ है, हाँ 2 है. ऑरेंज कलर, देखिए यहाँ पर भी ऑरेंज कलर. चेक कीजिए. सेम थिंग आप करोगे अभी वर्टिकली. 2
plus 0 2, 0 plus 0 plus 0 0, यहाँ पे 2 और 2. So आपने जो f into u into v का कैलकुलेशन अंदर रेक्टेंगल में लिखा था, अब आप उसका टोटल ले रहे हो बाहर. So please see the color coding. I'm sure you can see the color coding very clearly. Yes? Okay. So that is how you got f into u into v. And my dear students, f into u into v का टोटल करो. चलो जल्दी से 2 plus 0 plus 0 plus 2 कितना आया? 4. इस साइड भी कर दीजिए. 2 plus 0 plus 2 कितना आया? 4. This is your check point. अगर आपके दोनों साइड का FUV रेड कलर वाला सेम आता है तो आपने इतनी सारी मेहनत जो की is correct. Very good. So F into U into V clear हो गया. अब तो बहुत easy हो गया. अब आपको फॉर्मूला में क्या चाहिए? Now you require U into frequency of U, right? And then you require V into frequency of V. So देखो पहले ये येलो कलर वाला देख लो. U into frequency of U बाद में देखते हैं. पहले ये easier है, ये देख लीजिए. V into frequency of V is your next column. ये कैसे आया? ये वाला V येलो कलर multiplied by ये frequency of V. 3 into -1 -3. 3 into 0 0. 3 into 3 into 1 3 and 1 into 2 is 2. I hope you understood ये कैसे आया. I'm sure for that. देखिए yellow color coding. Yes. So you only multiplied the two yellow columns to get these answers over here. Okay. और फिर इसका total कीजिए. Sigma U frequency of U is equal to 2. अब आप जो एक साइड पे करते हो वो दूसरे साइड पे भी करना ही पड़ेगा. Look at U frequency of U. जल्दी से देखिए. Yellow color. See, ये finish हो गया. Okay. अभी इसकी बारी. Now we are here. U into frequency of U. Okay. U is -1 multiplied by frequency of U is 3. इन yellow colors को multiply करके देखो उसका आंसर यहाँ पर है. U frequency of U दिख रहा है? Yes. -1 into 3 -3. Very good. 0 into 6 0. 1 into 1 1. I'm sure you are understanding. 3 और -1 को multiply किया, आंसर लिखा U frequency of U. 6 और 0 को multiply किया, आंसर यहाँ है यहाँ पे. Same way, अब इसका total लीजिए. Sigma U frequency of U कैसे मिला? -3. चलो मेरे साथ कैलकुलेट करो. +0 +1 कितना आया? -3 +1 is -2. Okay. चलिए आपको सिग्मा U frequency of U मिल गया और इससे पहले क्या मिला था आपको? सिग्मा V frequency of V जो 2 था. ओके ये आपको याद रखना है. लास्ट कैलकुलेशन. अभी आपको ढूंढना है U square frequency of U. Be with me. Blue color over here. And V square frequency of V. पहले हम U square frequency of U करते हैं. बहुत easy है. U का square into frequency of U. U माने ये yellow color. -1 का स्क्वायर करो कितना हुआ? +1. +1 multiplied by 3 कितना हुआ? 3. तो आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3. वेरी गुड. फिर वापस U 0 square into 6 0. 1 square into 1 1. That's how I got my U square frequency of U. U का स्क्वायर किया और बाद में उसको मल्टीप्लाई किया frequency of U के साथ. मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर आया I have written down over here in blue color for you, blue highlight for you. So 3 plus 0 plus 1. So sigma U square frequency of U is equal to 4. You can see the dark blue color. Yes, please remember these numbers or write them down if you can. Or what you can do is, you can pause my video in between, right? And start writing the table, okay? Chaliye. Last calculation. Yes, last calculation. V square frequency of V. ये green color है. Look at the two green color columns. V का square. माने ये देखिए मेरा cursor. -1 का square. कितना होगा? +1. Multiplied by frequency of V. That is 3. So, -1 square +1. 1 multiplied by 3 is 3. देखिए pink color में यहाँ पर. Very good. Same way, next. V square, 0 का square multiplied by 3 is 0. V square,
1 का square multiplied by 3 is 3 and be careful. V का square करना है. Next number कौन सा है? 2. 2 का square कितना होता है? 2 2s are 4. Very good. 4 multiplied by 1 is equal to 4. That's how you get this pink color 4 over here. I'm sure you understood. अब क्या करना है? इतनी मेहनत की, सबका टोटल ले लो. 3 plus 0 plus 3 plus 4. कितना आया? Sigma V square frequency of V is equal to 10. Very good, my students. You are very patient. Congratulations. The table is complete. अब कुछ नहीं करना है. सारी values देखिए. N कितना आया? 10. Sigma F into U into V कितना आया? 4. U square frequency of U कितना आया? -2. V square frequency of V कितना आया? +2. Sigma U square frequency of U कितना आया? 4. और V square frequency of V कितना आया? 10. Wow. So much of calculations we did. You are a lovely student. Very good, congratulations. अब ये सारी values हमको कुछ नहीं करना है. All these values, my dear students, come on, substitute the values into the formula. I am back again as the video. I'm very happy. बहुत अच्छा calculation किया मेरे साथ. Come on, guys. You know this formula of bivariate table. Quickly substitute all the values in this table and calculate. What do you get? R is equal to 40 minus 4 upon under root 40 minus 4 under root 100 minus 4. Calculate, please. You have to be a little quick. If you want, you can keep on pausing the video and do the calculations on your own. Kitna aaya finally? What is the value of R that you get? It's on your screen. Mind you, minus minus plus hota hai. Please don't make a mistake. Okay? Very good. So my dear students, you get R is equal to 44 upon 58.78775. I always told you, if possible, do all the calculations till 4 decimal places. Remember that? Good going. So R is equal to 0.74845. That is partial positive correlation. I hope you understood all the Gujarat University 2019 exam paper sums and the few important theories which I discussed with you. All right. Thank you, everybody. Happy learning. Indeed, I'm sure you have understood the lecture, and like this little smiley, you also have a smile on your face. Happy learning, my dear student. Please practice well, because as I always tell you, practice makes a person perfect. All the best for your exams. Happy learning. Thank you. God bless you. Bye-bye.